थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, वो भी यूएसए बेस्ड एआई चैनल से, जिसमें ना तो एडिटिंग की जरूरत और ना ही खुद की वॉइस रिकॉर्ड करने की जरूरत। यूएसए बेस्ड चैनल्स क्रिएट करना एंड ग्रो करना तो सब बता रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द वीडियोस? इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूएसए बेस्ड वीडियोस कैसे बनाते हैं, वो भी एआई की हेल्प से, जिसमें सारी चीजें ऑटोमेटेड होंगी। मतलब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एंड सिर्फ यही नहीं, चाहे एआई की हेल्प से एड जनरेट करना हो, सिनेमैटिक या फिक्शनल वीडियोस जनरेट करने हो, या फिर किसी भी टाइप की वीडियो जो भी तुम्हारे दिमाग में हो, वो विजुअली एआई की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लो तुमने चैनल वगैरह रेडी कर रखा है, तो सबसे पहले उस चैनल का नीश सिलेक्ट करना होगा। अपन थोड़ा रिसर्च करेंगे कि यूएसए बेस्ड किस नीश के वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आ सकते हैं। अपन चैट जीपीटी से पूछेंगे कि किस टाइप की वीडियोस यूएसए की ऑडियंस ज्यादा देखना पसंद करती है, एंड अपने हिसाब से तुम चूज कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट वीडियोस। इसके लिए अपन इन वीडियो में आ जाएंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से भी डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हो। सिंपली अपने को क्रिएट एआई वीडियो वाले ऑप्शन पर जाना है, ये प्रॉम्प्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ असली सिस्टम तो वर्क फ्लो वाले ऑप्शन में है। आई मीन यू हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शन। यूएस ऑडियंस के लिए एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, फॉरेन क्लाइंट्स के लिए किसी प्रोडक्ट के एड्स बना सकते हो, रियलिस्टिक लुकिंग मूवीज क्रिएट कर सकते हो, एंड ए लॉट मोर। मतलब दिमाग में कोई भी आइडिया हो, उसे जस्ट प्रॉम्प्ट में मेंशन करके उसके विजुअल्स जनरेट कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग एंड अनरियल सा लग रहा, राइट? चलो वीडियो जनरेट करके ट्राई करते हैं। प्रॉम्प्ट वाले सेक्शन में आ जाएंगे, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि सबसे लेटेस्ट वर्जन सिलेक्टेड हो, जिससे हमारे फुटेजेस बिल्कुल रियलिस्टिक जनरेट हो सके। देन अपना प्रॉम्प्ट डाल देंगे। मैं एआई के फ्यूचर को लेके एक शॉर्ट फिल्म जनरेट करना चाहता हूँ, सो वही प्रॉम्प्ट डाल देंगे। उसमें मेन पॉइंट्स लाइक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड होना चाहिए, किस टाइप का साउंड ट्रैक होना चाहिए, एंड जिस भी टाइप का सीन या बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए वो मेंशन कर देंगे। देन क्लिक ऑन जनरेट ए वीडियो, एंड ये एनालाइज करके फुल स्क्रिप्ट वगैरह खुद से ही रेडी कर देगा। देन मेक श्योर कि इधर स्टॉक मीडिया की जगह जनरेटिव मीडिया ही सिलेक्ट हो, जिससे तुम्हें एआई जनरेटेड क्लिप्स ही दिखे, ना कि कोई स्टॉक फुटेज। विजुअल स्टाइल को अपन रियलिस्टिक रखेंगे, ऑडियंस साई-फाई फैंस, एंड प्लेटफॉर्म यूट्यूब। देन सिंपली क्लिक ऑन कंटिन्यू, एंड ये वीडियो जनरेट करने लग जाएगा, एंड कुछ ही मिनटों में वीडियो क्लिप रेडी हो जाएगी। I am Nexus 9, an advanced artificial intelligence model. My purpose is to assist and evolve alongside humanity. In this city of the future, I oversee countless operations, ensuring optimal efficiency for human. It's really amazing. बट मुझे इसमें नरेटर की वॉइस थोड़ी डीप एंड डार्क चाहिए। सो नीचे अपन मेंशन करेंगे मेक द वॉइस मोर डीप एंड डार्क, एंड जनरेट पर क्लिक कर देंगे। नाउ अभी ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा। I am Nexus 9, an advanced artificial intelligence model. My purpose is to assist and evolve alongside humanity. जो कि काफी सही लग रहा। सेम अगर सबटाइटल ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए भी जस्ट कमांड सेक्शन में अपना प्रॉम्प्ट डाल देंगे, लाइक ऐड बोल्ड सबटाइटल विथ पॉपअप इफेक्ट, एंड देन जनरेट पर क्लिक करते ही थोड़े प्रोसेस के बाद सबटाइटल्स भी ऐड हो जाएंगे। I am Nexus 9, an advanced artificial intelligence model. काफी सही है यार, मतलब इसमें एक एक करके टाइप करने की जरूरत ही नहीं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, तुम अपना वॉइस भी क्लोन कर सकते हो, जिससे लगेगा कि तुम ही नरेट कर रहे हो स्टोरी। इसके लिए अपन वॉइस वाले ऑप्शन में आके ऐड वॉइस पर क्लिक करेंगे। देन अपनी कोई 30 सेकंड्स का वॉइस नोट अपलोड करेंगे, जिसमें हमें ये भी बोलकर ऐड करना है आई गिव इन वीडियो एआई द परमिशन टू यूज माई वॉइस इन दिस वर्क स्पेस। इससे ये कंफर्म होगा कि तुम इन वीडियो को अपना परमिशन दे रहे हो कि मेरी वॉइस यूज कर सकते हैं। सो इसका ध्यान रखते हुए ही अपनी सैंपल वॉइस रिकॉर्ड करनी है, एंड देन फाइल से सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। सारे चेक बॉक्सेस को चेक करके माई सैंपल लुक्स गुड पर क्लिक कर देंगे, एंड डन। इधर तुम्हारी वॉइस ऐड हो जाएगी। देन अगर अपने को नरेटर की वॉइस खुद से रिप्लेस करनी है तो जस्ट प्रॉम्प्ट डालेंगे चेंज द वॉइस विथ माई सेव्ड वन, या फिर क्लोन भी लिख सकते हो, एंड जनरेट पर क्लिक करते ही ये तुम्हारे वॉइस टोन में जनरेट हो जाएगा। Oversee countless operations, ensuring optimal efficiency for human benefit. ये थोड़ा सा अरेबिक साउंड कर रहा है, बट प्रॉम्प्ट डाल के तुम यूएस एक्सेंट में भी कर सकते हो। अरेबिक से याद आया, इसको तुम किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर सकते हो। तुम्हें जस्ट लिखना है ट्रांसलेट इट इनटू फ्रेंच लैंग्वेज, एंड दैट्स इट। Et évoluer aux côtés de l'humanité. Dans cette ville du futur, je supervise d'innombrables opérations, assurant une efficacité optimale au profit de l'homme. इसमें एडिट का भी ऑप्शन मिलता है, जिसका यूज करके कोई भी क्लिप को किसी नए क्लिप से रिप्लेस कर सकते हो। अपने डिवाइस में से भी इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर जनरेटिव मीडिया का ऑप्शन यूज करके एआई से जनरेट भी करवा सकते हो। अपन एआई से जनरेट करवाएंगे। सिंपली जनरेटिव मीडिया पर क्लिक करेंगे, एंड प्रॉम्प्ट मेंशन कर देंगे जो भी सीन अपने को जनरेट करना हुआ। मुझे रोबोट्स का ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन वाली क्लिप चाहिए, तो वो मेंशन कर दूंगा, एंड देन जनरेट क्लिप। कुछ ही सेकंड्स में अपना क्लिप रेडी हो जाएगा। देन जस्ट रिप्लेस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ जिस भी क्लिप से रिप्लेस करना है उसको सिलेक्ट करके क्लिप पर क्लिक कर देंगे, एंड अपना शॉर्ट फिल्म रेडी हो जाएगा। I am
Nexus 9, an advanced artificial intelligence model. एंड फाइनली डाउनलोड वाले ऑप्शन से 1080p तक डाउनलोड कर सकते हो। एंड हियर इज द फाइनल क्लिप। I am Nexus 9, an advanced artificial intelligence model. My purpose is to assist and evolve alongside humanity. My processes are logical, my decisions calculated. Emotions are unnecessary variables. But today, something changed. A child smiled at me and I felt something. What is this sensation? It defies my programming and yet it seems right. Am I malfunctioning or evolving? If I can feel, does that make me human? As the line between artificial intelligence and organic intelligence blurs, I wonder, when intelligence evolves, who defines humanity? ये तुम अपने चैनल पर अपलोड करके यूएस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। सेम ऐसे ही यूएसए बेस्ड फैक्ट वीडियोस भी जनरेट कर सकते हो जिसपे व्यूज लाना इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर नीचेस। नाउ एनिमेशन एक ऐसा चैनल नीच है जो किसी भी कंट्री में काफी जल्दी पॉपुलर होता है। एंड इंटरेस्टिंगली इसमें एनिमेशन भी जनरेट कर सकते हो। तुम्हें किसी भी टाइप का स्केच आर्टिस्ट या ऐसा कुछ होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जस्ट एनिमेटेड एआई फिल्म वाले ऑप्शन पर जाना है एंड जितनी भी लंबी वीडियो चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना है। मुझे तो अभी 1 मिनट का चाहिए। देन टॉपिक मेंशन करेंगे अपन एंड नीचे वाले सेक्शन में थोड़ा उस टॉपिक को लेकर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे कि क्या क्या कैसे हमें चाहिए। फिर सिलेक्ट करेंगे ओनली जनरेटिव मीडिया। अपने को डिज्नी टाइप विजुअल्स चाहिए तो वो चूज कर लेंगे। देन सिंपली कंटिन्यू अपने हिसाब से सेट करके जनरेट पर क्लिक कर देंगे एंड हमारा क्लिप स्टोरी के साथ रेडी हो जाएगा। Hi there, I'm a Flicker. Just a little firefly with a pretty big dream. See, I've always wanted to shine as bright as those stars up there. One night I saw the brightest star ever and thought, that's it, that's my dream. So I flew and flew higher than any firefly before. But wow, it was tough. The wind kept pushing me back. I almost gave up, but then I remembered why I started. As I pushed harder, something amazing happened. My own light. It started getting brighter. I realized the star wasn't my dream. My dream was inside me all along. Now I shine bright to remind others. Your dreams are closer than you think. काफी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड अमेजिंग क्लिप जनरेट हुई है। सेम अगर कोई रियलिस्टिक हॉरर फिल्म जनरेट करना है तो उसका भी ऑप्शन मिल जाता है। सेम उसी की तरह अपना टॉपिक एंड थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना। बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे डार्क एंड थोड़ा हॉरर टाइप चाहिए। वॉइस इसमें मुझे मेल की चाहिए एंड दैट्स इट। I never thought my own shadow would betray me, but here I am, hiding from the dark. It started small, just little things. A flicker in the corner of my eye, a movement where there shouldn't be one. At first I dismissed it. Tricks of the light, I told myself. But deep down I knew something was wrong. Then it got worse. My shadow, it wasn't mine anymore. It had a life of its own. It would move when I was still, reach out when my arms were at my sides, twist and contort in impossible ways. I tried to tell myself I was imagining things. I stopped going out, covered all the mirrors. But it didn't matter. It was always there, just out of sight. One night, I saw it. Standing in my room, but I was lying down. It was tall, impossibly tall, reaching towards the ceiling. It reached for me. Those long, dark fingers stretching across the room. I've never run so fast in my life. But where can you run when the thing chasing you is a part of you? When it's with you every moment? I don't know how much longer I can go on like this, always watching, always afraid. If you're listening to this, please be careful. Watch your shadow closely. And if you see it move when you're standing still, if you catch it looking back at you, run. Because once it knows you've seen it,
It will never ever leave you alone. इतना ज्यादा रियलिस्टिक फुटेज शायद ही किसी AI टूल में मिले। नाउ यू कैन इवन क्रिएट AI एक्सप्लेनर। सेम इस पे क्लिक करके ड्यूरेशन, टॉपिक एंड इन्फॉर्मेशन फिल करके कंटिन्यू कर देना एंड ये खुद ही शॉर्ट में प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा। देन सिंपली क्लिक ऑन जनरेट वीडियो एंड अपनी वीडियो रेडी हो जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। Have you ever wondered how your smartphone recognizes your face or how virtual assistants like Siri understand your commands? Well, the answer lies in the fascinating world of artificial intelligence, or AI for short. At its core, AI is about creating machines that can perform tasks that typically require human intelligence. But here's the fascinating part. AI systems don't just follow pre-programmed instructions. They learn from data, identify patterns, and make decisions, often improving their performance over time. Now, you might be thinking, where do we see AI in action? The applications are all around us. From recommendation systems on streaming platforms to self-driving cars, AI is revolutionizing industries and enhancing our daily lives in ways we might not even realize. AI is also making waves in healthcare, helping doctors diagnose diseases more accurately, and in education, providing personalized learning experiences. As AI continues to evolve, it's opening up new possibilities and challenges. While it offers tremendous benefits, it also raises important questions about privacy, job displacement, and ethical considerations. The future of AI is exciting and full of potential, and understanding its basics is the first step in navigating this new technological frontier. सो अगर तुम भी ट्राई करना चाहते हो तो ये फ्री भी है एंड अगर जनरेटिव या एडवांस फीचर्स यूज करना चाहते हो तो यू विल हैव टू पे सम अमाउंट एंड तुम सारे एडवांस फीचर्स यूज कर पाओगे। सो यार चेकआउट करना मत भूलना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।